इनको इन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, and they can easily control it because they have got very good networking, communication and marketing skills with them, and they can do this by following a fixed routine pattern. और इनको अपनी जो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट करनी है, इनका डीपेस्ट डिजायर शुड बी towards maintaining their health. So if they do this, they will reap the benefits of the sixth house, which is huge house of money. जब आपका थर्ड लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति, आप पाएंगे अपना हार्ड वर्क, अपनी अट्रैक्शन या इनका डीपेस्ट डिजायर या इनका मोह एक बिजनेस के प्रति होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस के प्रति होगा, किसी प्रकार की पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर्स या कोलैबोरेशंस करने का होगा. दे विल ऑलवेज हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ डूइंग सम इंडिपेंडेंट बिजनेस. सातवां घर स्पाउस का भी है, सो दे विल ऑलवेज हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स देयर स्पाउस. इनका अट्रैक्शन होगा, इनका मोह होगा इनकी वाइफ, इनका मोह दूसरा जेंडर भी होगा. बट इन लोगों के पास आर्ट ऑफ नेटवर्किंग है. सो सिंस द सेवेंथ हाउस is of the opposite party or the opposite gender, so इन लोगों के पास एक स्पेशल आर्ट है of networking with the opposite world. The seventh house is the opposite world, so they are very good at networking, in building relationships. तो ऐसे लोग आप पाएंगे कि बहुत आसानी से रिलेशनशिप्स बना लेंगे. ये अपना जो हार्डवर्क लगाएंगे, ये डेली इनकम्स में लगाएंगे कि डेली इनकम कैसे रहेगी. और ये अच्छी प्लेसमेंट है एक रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, because your deepest desire backed up with your hard work is sitting in the seventh house, which is the house of relationships. So easily the other person will have an inclination towards them, or he will have an inclination towards the other person. तो ये लोगों का जो डीपेस्ट डिजायर ये भी है, they like the company of the opposite gender, whether it is their spouse or anyone else, because it is the house of interaction also. And they like talking. And they're good at talking and they're good at interaction. ये जो हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट बोलती है, इनकी कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप और बिजनेस मैटर्स ही ये ज्यादातर डिस्कस करेंगे. इन लोगों को अपनी नेटवर्किंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल से और इंटरैक्शन से with the opposite person and focusing on a relationship
they will be able to do wonders in their businesses. They have got the acumen, they have got the temperament, they've got the marketing skills, they've got the communication skills, they've got the networking skills. So they have to work on a simple concept of relationships. The moment they start working on relationships, their dharma karma alignment of their hard work will be done. When the third house lord sits in the eighth house, the person will put efforts and his hard work or be attracted, or his deepest desire would be towards other customers' money. क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति का पैसा है, इनका पैसा नहीं, आठवां भाव, तो इनका डीपेस्ट डिजायर कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के प्रति होगा. इनका डीपेस्ट डिजायर, वो इन-लॉज का घर है, his in-laws will be his deepest desire. Activities of the eighth house will be their deepest desire, means occult will be their deepest desire. Undersea works, any kind of manufacturing works, insurance businesses, mines auditing, all these tantra healings will be their deepest desires. Technology and transformation, because eighth house is technology also and it is the house of transformation also. तो जब ये एक्टिव होता है एट्थ हाउस आपकी कुंडली में, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आता है. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है या बहुत ज्यादा सिगरेट पी रहा होता है या नॉन वेज खा रहा होता है, it brings in transformation, या तो छोड़ देता है उसको. He transforms himself whenever the eighth house is activated. तो इनके जो फेवरेट टॉपिक्स होंगे, जिसका भी थर्ड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठेगा, इनके टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन, अपने में बदलाव लाना, इनके फेवरेट टॉपिक्स होंगे. धर्मा कर्मा अलाइनमेंट हमारी ये बोलती है कि इन लोगों को अपनी विल पावर बिल्ड करनी पड़ेगी. They have to strengthen their willpower and their mind. इन लोगों को अपनी नेटवर्किंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको अलाइन करना पड़ेगा through some kind of technology. They should be using like top of the end technology, because technology is the eighth house, or communication is the third house. So if they align the technology and communication through their networking skills, they can get windfall gains through the efforts that they make. तो ऐसे लोगों का जो इंक्लिनेशन है वो मैं बता ही चुका हूं किन किन के प्रति होगा.
उनको ट्रांसफॉर्मेशन लानी है. धर्मा कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी सेज दिस. And they should make the use of technology and their communication. Technology and communication they should be using in whatever hard work they are putting in, and use their networking skills to get the best windfall gains of the 8th house. So if they do this, they will be aligning their deepest desire. Actually, तीसरा भाव डीपेस्ट डिजायर और अष्टम भाव हिडन है. इन लोगों को अपने डिजायर्स भी आप देखेंगे कि अगर ये हिडन रखेंगे तो भी इनको ये अलाइन कर पाएंगे अपने हार्ड वर्क्स को. तो दे शुड ऑलवेज keep whatever desires they have got, whatever inclinations they have got, in a hidden way. If they're able to do this, they will be still making alignment as per the dharma karma alignment of us. So they have to be secretive. They have to keep hidden things, and whatever the hard work they are putting in, जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का इनको इस्तेमाल करना चाहिए थ्रू देयर मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग स्किल्स. The third house lord in the 9th house. ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे कि अपने फादर, अपने गुरुओं, हायर लर्निंग, लंबी दूरी की यात्राएं, किसी पब्लिकेशन या किसी कंसल्टेंसी, ये ट्रेडिशन एंड कल्चर्स में ये बहुत ज्यादा अपना हार्डवर्क लगाएंगे. ऐसे व्यक्तियों के पाएंगे कि जो बहन भाई हैं वो काफी रिलीजियस और आइडियलिस्टिक होंगे और सिंसियर होंगे. अच्छा, 8वें में एक और बात है कि उनके बहन भाई काफी अनएथिकल वेज भी इस्तेमाल करेंगे. तो जिनका भी थर्ड लॉर्ड 8th में है, it clearly shows that their siblings will be secretive also, and plus they will use unethical ways. Like in 9th, if the third lord sits in 9th, then their siblings will be idealistic and sincere. They will follow their tradition and culture. There, they are not going to follow their tradition and cultures. क्योंकि 9वां घर दूसरे व्यक्ति की अट्रैक्शन है. क्योंकि हम जो भी चीज खरीदते हैं, हम किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उसको खरीदते हैं. हमारी अट्रैक्शन तीसरा घर है, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की अट्रैक्शन 9वां घर है. तो आपको अगर कोई भी चीज बेचनी है इस दुनिया में, तो आपको नौवां घर अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. जिस दिन आप अपना 9वां घर स्ट्रॉन्ग कर लोगे, you will be able to sell anything in this world. So here the dharma karma alignment theory of R says these people should put in their communication and their networking skills and their marketing skills
ethically for their growth in business. So whatever efforts they're putting in, it should be backed up with some ethics. They should use their communication skills and the networking skills and the marketing skills. The moment they align this, वो दुनिया में कुछ भी चीज बेच देंगे. So this is the Dharma Karma alignment for the third house lord in the ninth house. When the third house lord sits in the 10th house, the person जो अपने एफर्ट्स लगाएगा, अपना इसका इंक्लिनेशन रहेगा या मोह रहेगा, वो अपने नेम फेम स्टेटस को पाने में रहेगा, पॉलिटिक्स की तरफ रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ रहेगा, इसका झुकाव कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स की तरफ रहेगा, इसका झुकाव पावर स्टेटस पाने के प्रति रहेगा. इनका जो डीपेस्ट डिजायर है वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए रहेगा. इन लोगों के जो बहन भाई होंगे, जो सिबलिंग्स होंगे, दे विल हैव ग्रेट नेम एंड फेम, और वो कैरियर में भी अच्छा राइज करेंगे. तो यहाँ हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट ये बोलती है कि इन व्यक्तियों को अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में, they should use their marketing, their communication, their networking skills to achieve name, fame, and status. So they should work towards the three skills that they have got of marketing. Plus, here they can travel for their profession also. Use their marketing, traveling in their profession, their communication and networking skills. This, if they implement in their professions, backed up with their hard work, they will get name and fame and status and power. This is what the third lord is, by sitting in the 10th house, is saying you. तो थर्ड की एक्टिविटीज लीजिए, 10th में डाल दीजिए, उनकी फ्यूजन करिए और उस हिसाब से आप अपनी अलाइनमेंट करिए. Because as I told you that these house lords are the carrier. ये वहां से कुछ कैरी करके आए हैं और जहां बैठे हैं उन घरों के साथ आपको अलाइन करना है. The third house lord sits in the 11th house. इन व्यक्तियों का जो इंक्लिनेशन रहेगा, या ये जो अपना हार्डवर्क लगाएंगे, वो अपने सोशल सर्कल, अपने दोस्तों यारों के साथ लगाएंगे, क्लब्स, पब्स, एनजीओज में लगाएंगे. ऐसे व्यक्तियों का बड़ा एक्टिव सोशल सर्कल रहेगा. ऐसे व्यक्ति
क्योंकि ऑलरेडी इनमें नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग का स्वामी सोशलाइजिंग में यानी कि मासेस में जाके बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े मिलनसार व्यक्ति होंगे। आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति बड़े मिलनसार होंगे। ऐसे व्यक्तियों के जो नेटिव्स भी होंगे, सिबलिंग्स होंगे, वो बहुत आसानी से धन अर्जित कर पाएंगे, यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स उनको मिल जाएंगे लाइफ में। हमारी धर्मा और कर्मा जो अलाइनमेंट थ्योरी है वो ये बोलती है कि इन व्यक्तियों का इतना बड़ा सर्कल होता है, इनको अपनी नेटवर्किंग, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी मार्केटिंग स्किल्स और अपना हार्डवर्क, इनको जो लगानी चाहिए, मासेस के प्रति लगानी चाहिए या अपने सोशल सर्कल में लगानी चाहिए, that they can make their life easier. So they will, means 11वां घर प्रॉफिट गेन्स का है। तो जब तक ये अपनी एक्सपेक्टेशंस को या अपनी एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक इनका हार्डवर्क विल नॉट रीपे देम। देयर हार्डवर्क और देयर डीपेस्ट डिजायर is simply telling them, as per the dharma karma alignment theory, that you have to put in your hard works, your deepest desire with your social circle and make them or give them that assurance that they are resourceful for them and they can easily do it through their communication and networking skills. So they have to make this masses or their friend circle or their social circle feel comfortable that they can make their life easier. So they can easily align it because the promise is already there. Third Lord sitting in the 11th house, which is of profits and gains and of the masses. So they will get profits and gains if they put in hard work. With this, they have to control their ambitions and expectations and make these masses or his social circle feel that they will make their life resourceful and easier. And this they will do it through their communication and network skills. Third house lord sits in the 12th house. ऐसे व्यक्ति होंगे ये अपना पूरा ही इनकी अट्रैक्शन या इनका हार्डवर्क या इनकी डीपेस्ट इंक्लिनेशन or their desires will be to spend. They will be spendthrift. ये अगर किसी मॉल में जाएंगे और वहां एक कोई टी शर्ट $50 की लगी होगी और एक $100 की लगी होगी, तो ये $100 की टी शर्ट को उठा लेंगे
बजाय कि 50 को लेने की बजाय, बिकॉज दे हैव गॉट एन इंक्लिनेशन या इनका डीपेस्ट डिजायर खर्चा करना. Plus, they'll have their deepest desire for foreign lands. They will have for yoga meditation. They will have for some kind of donation, some charity. 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट्स का भी है और लॉसेस का भी है. तो ऐसे व्यक्तियों को और धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सेज to avoid their disappointments, they should settle abroad, because the third house is also away from home and fourth house is foreign lands. So if they're putting in hard works and they're not reaping the benefits, they should settle abroad. And they should put in their hard work or their efforts towards investments rather than expenditure. So if they do this alignment of putting money or their expenditures in form of investments, they will be aligning their expenditures. Otherwise, with the deepest desire, they will always be a spendthrift. So even if they are spendthrift, they should try converting this expenditure into an investment. That is the alignment that these people have to do who have got their third lord in the 12th house and can even invest in foreign lands, because the third house is away from home and 12th house is foreign lands and investments. So their expenditure should be towards these activities. They can even do some kind of donation to charitable institutes. And here, the siblings of the native will also be spendthrift. So here, to avoid disappointments,